बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कानूनी शहादत आर्डर में आज हम डिस्कस करेंगे जुडिशल नोटिस। One of the aim of the law is to dispensation of the justice within the shortest possible time. For this purpose, as well as for the convenience of the litigant parties, law has prescribed the certain measures which accelerate the smooth running of the legal business. One of them is that certain facts need not to be proved by the litigant parties. This rule is an contradiction with the general rule that all the facts must be proved before the court. The court is bound to take notice of those facts. In this topic, we are concerned with the exception to the general rule. Judicial notice means the cognizance taken by the court itself of certain matter, the existence of which is unquestionable within the meaning of public knowledge. रेलिवेंसी की अगर बात करें, आर्टिकल 111 से 113 कानूनी शहादत आर्डर 1984 इस हवाले से डील करता है। फैक्ट्स जुडिशली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव। आर्टिकल 111 फैक्ट्स जुडिशली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड। नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड बी प्रूव्ड। एविडेंस are statement of witness which go against the interest of the particular party and that party does not question the correctness of such assertion or disposition of witness would be deemed to have been admitted। 1999 CLC 1358 इस हवाले से रिपोर्ट हुआ। आर्टिकल 112 इस हवाले से ये कहता है, फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। ऑल पाकिस्तान लॉज। कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है। द आर्टिकल्स ऑफ वार्स फॉर द आर्म फोर्सेस। कोर्ट इस मामले में जुडिशियल नोटिस ले सकती है। द कोर्सेज ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेशन एंड द लेजिस्लेचर एस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन पाकिस्तान। कोर्ट इस हवाले से जुडिशियल नोटिस ले सकती है। द सील ऑफ ऑल द कोर्ट्स इन पाकिस्तान एंड ऑफ ऑल कोर्ट्स आउट ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश by the authority of the federal government or the government representatives, the seal of the court of admiralty and maritime jurisdiction and the notaries publics and all seals which any person is authorized to use by any article or regulation having the force of law in Pakistan। कोर्ट इन तमाम मामलात में जुडिशियल नोटिस ले सकती है। द एक्सेशन टू द ऑफिस नेम्स टाइटल फंक्शंस एंड सिग्नेचर ऑफ पर्सन filing for the time being any public office in Pakistan if the fact of their appointments of such officer is noticed in the official gazette। कोर्ट इस मामले में जुडिशियल नोटिस ले सकती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइटल नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी स्टेट एंड सॉवरन रिकॉग्नाइज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। कोर्ट इन मामलात में जुडिशियल नोटिस ले सकती है। द डिवीजन्स ऑफ टाइम, द जियोग्राफिकल डिवीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड पब्लिक फेस्टिवल्स फैक्ट्स एंड हॉलीडेज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट। कोर्ट इन मामलात में जुडिशियल नोटिस ले सकती है। द टेरिटरीज अंडर द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है। कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है। द कमेंसमेंट, कंटिन्यूएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन पाकिस्तान एंड एनी अदर स्टेट और बॉडी ऑफ पर्संस। कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है। द नेम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट and their deputies and subordinate officers and assistants and also all of the officers acting in execution of its process and of all the advocates and other persons authorized by law to appear or act before it। the rule of the road on land or at sea। कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है। in all cases referred in clause 1 and also in all matters of public history, literature, science and arts। Court may resort for its aid to appropriate books and documents reference if the court is called upon by any person to take judicial notice of any fact, it may refuse to do so unless and until such person produce such books or document and it may consider necessary to enable it to do so। इस हवाले से कुछ रिपोर्ट हुए। द वर्ड लॉ नेसेसरी कैनोट्स अ रिटन लॉ आर अ रिटन इंस्ट्रूमेंट हैविंग अ फोर्स ऑफ लॉ। PLD 1963 सुप्रीम कोर्ट 1 इस हवाले से रिपोर्ट हुआ। द एक्सप्रेशन ऑल लॉज इंक्लूडिंग स्टैट्यूटरी लॉ एज वेल एज अनरिटन लॉ वेदर अ पर्सनल लॉ आर ऑफ अ लोकल नेचर
a usage having the force of law. Clause A postulate judicial notice only of all Pakistan laws omitting from its scope exercise of executive functions under such law PLD 1997 Karachi 423 सवाल से रिपोर्ट हुआ PLD 1997 कराची 423 से वाले से रिपोर्ट हुआ रूल ऑफ रोड्स ओवरटेकिंग हैज टू बी टेकन जुडिशियल नोटिस 1989 CLC 22180 से वाले से रिपोर्ट हुआ रेगुलेशन द वर्ल्ड लॉ covers and regulations PLD 1964 Peshawar 212 इस हवाले से रिपोर्ट हुआ PTO made the basis of permanent transfer deed can be taken judicial notice PLD 1973 Karachi 459 इस हवाले से रिपोर्ट हुआ pure question of law duty of the court itself is to apply the law it is the court who is supposed to aware all the laws of the country on its sleeves party not even bound to engage counsel whatever law becomes applicable on omitted or proved fact has to be given effect whether or not same has been relied upon by the party to the proceeding 1984 CLC 309 इस हवाले से रिपोर्ट हुआ PTCL 2004 CL 494 इस हवाले से रिपोर्ट हुआ 2005 PTD 480 इस हवाले से रिपोर्ट हुआ The court has ample power and jurisdiction to take judicial notice of the discrepancies pointed out in the General Power of Attorney 2004 MLD 620 इस हवाले से रिपोर्ट हुआ आर्टिकल 13 इस हवाले से डील करता है फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड नो फैक्ट नीड बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग which the parties or their agent agrees to admit at the hearing before the hearing they agrees to admit by any writing under their hands or which by any rule of pleadings in force at the time they are deemed to have been admitted by their pleadings provided the court may in its discretion require the facts admitted to be proved otherwise than by such admission exception to this rule article 113 enumerates the second exception to the general rule that facts admitted by the litigant parties during the trial need not be proved if a plaintiff claims certain rights and defendant admitted the same during the trial, the admission of defendant is not required to be proved. The same article also empowered the court to ask for further evidence other than mere admissions. As far admission is concerned, it is made in the following ways. By express or implied admission made during the hearing, by agreement in writing between the litigant parties before the hearing, एप्लीकेशन की अगर हम बात करें आर्टिकल 113 कहाँ अप्लाई होगा दिस आर्टिकल इज एप्लीकेबल टू सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस केस ला इस हवाले से रिपोर्ट हुए एडमिशन इन प्लीडिंग एडमिशन मेड इन प्लीडिंग हैव ओवरराइडिंग रोल which does not permit that admission through evidence or rebutted statement be made basis of adjudication in exclusion of pleading admission in proceeding are conclusive but not the others 1995 MLD 690 सवाल से रिपोर्ट हुआ admission in pleading is not conclusive proof of the matter admitted if such admission is made by the mistake it can be permitted by the court to be withdrawn by amendment 1988 SCMR 322 इस सवाल से रिपोर्ट हुआ admission by counsel admission on pure question of facts made by counsel in his conduct of the case is binding on the client PLD 1969 Azad Jammu Kashmir 30 इस हवाले से रिपोर्ट हुआ the client need not have been present when the admission was made proviso of article 113 empower the court to require proof of the facts admitted in the case civil or criminal and the statutory practice usually observed in criminal cases is not accept admission as to dispense with proof. Court is empowered to require the proof of facts which are admitted by the evidence otherwise than by the admission. PLD 1989 Supreme Court 294 इस हवाले से रिपोर्ट हुआ admitted fact once the fact is admitted then by virtue of article 113 कानून शहादत order the same is not required to be proved
PLJ 2011 सुप्रीम कोर्ट 265 इस हवाले से रिपोर्ट हुआ। एडमिशन मोर सो इरोनियस एडमिशन which is wrong on the point of facts and made in ignorance of legal right has no binding effect on the person making it। PLD 1989 Supreme Court 749 इस हवाले से रिपोर्ट हुआ। क्रॉस एग्जामिनेशन where a fact is not questioned by opposite party in cross examination such fact is deemed to have been admitted। 2001 MLD 1169 इस हवाले से रिपोर्ट हुआ। रूल ऑफ प्रूडेंस admission under article 113 is a rule of prudence while admission under article 45 is gives effect to rule of the evidence। 2000 CLC 90 इस हवाले से रिपोर्ट हुआ। scope admitted fact need not any proof and if some portion of the statement of the witness remains without cross examination same would be considered as admission। 2017 PCRLJ 1121 इस हवाले से रिपोर्ट हुआ। Cross examination by accused himself cannot be substitute of cross examination by the counsel। 2018 PCRLJ 943 इस हवाले से रिपोर्ट हुआ। Written statement facts admitted in written statement need not be proved। 1993 MLD 87 2004 सुप्रीम कोर्ट 499 इस हवाले से रिपोर्ट हुआ। ये थी तमाम की तमाम डिस्कशन कि जब फैक्ट्स जो हैं वो किस तरह से एडमिट किए जाएंगे और कब उनको प्रूव करना होगा और कब कोर्ट उनको इटसेल्फ जो है एडमिसिबल इन एविडेंस करेगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।